Hey my loves, welcome back to my universe. I hope you all doing good. So in today's video I'm gonna share with you all this dewy glossy peachy look, and this I have created with a special product today which I'm gonna show you. So if you are interested, then please keep watching. So starting up with the primer, this is Wet n Wild Photo Focus Primer, which is in the dewy finish, and this doesn't blurs out your pores much. I mean it does, but not that much, and it provides you very beautiful sheen look. I mean you can see like how luminous kind of a look it provides. So I want today a bit glossy and dewy kind of a look, so that's why I'm using this primer today. As the primer sets on my face, I'm gonna fill up my brows with this Miss Clay eyebrow pencil, and this is in the shade dark brown, and all the product details you will get in the description box, so don't forget to check it out. So now for the base, I'm gonna use LA Pro Girl HD foundation. This one is a Illuminous foundation, and as you know we are gonna do today quite a dewy glossy finish look, so that's why I'm using this foundation. It has a really good coverage, so that's why I'm not doing any color correcting or something like that. And yeah, you can see बहुत ही अच्छे से this gonna blend on my skin, and it is an exact match to my skin tone. I just love this foundation. This is my favorite foundation, and it gives you a really good coverage, like medium to high coverage finish है इसका. So I really enjoy using this foundation for any occasion. I really go with this foundation. Like normally I'm not a foundation person, but if I go for any occasion or something good function events like that, I'm gonna go with this foundation because it gives you really full coverage, and I like using full coverage foundation on some occasions, not for the daily basis, but on some occasion I love full coverage foundation. Now to brighten up my under eyes, I'm gonna use Wet n Wild concealer, and this is one shade lighter to my skin tone, so that it gives you a really good brightening effect. Like mostly it's gonna give you a highlighted effect. So yeah, I'm gonna use it under my eyes, on my chin, on my cupid's bow, like all those places जहाँ पे light falls होती है, and so that those area gets highlighted. So that's why I'm gonna use it around my mouth as well. So yeah. So now I'm gonna set my concealer with my favorite loose powder. This is from Maybelline Fit Me. So I'm gonna use it where I have applied concealer. So I'm setting those concealer areas with this powder, and for the rest of my face I'm gonna use a compact from Faces Canada. So as you guys have seen, I have already done a base. So let's talk about the star product of this show, I mean the star product of this video. So this is the Chotu Sa face and eye palette from Swiss Beauty, and this is called Swiss Beauty Ultra Professional Palette. So ये पैलेट मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज मैं अपने हर एक वीडियो में आप लोगों से कहती हूँ कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो मल्टीटास्क हो, आई मीन मल्टीपर्पज़ के लिए हो, जो हम लोग एक ही पैलेट से बहुत कुछ कर सके. सो दिस इज़ द पैलेट विच आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल टुडे. सो ये पैलेट मुझे बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग लगा, एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल, लाइक अराउंड 245 or 300 समथिंग इट कॉस्ट. सो this is the thing. It has highlighter, it has contour, it has blush, and it also has 6 eyeshadows, but all of them are glitter. I'm like bit dissatisfied कि एक matte shade होना चाहिए था, but then it's okay. You can use blush or contour as your matte eyeshadow as well.
एंड ये सारे ही ग्लिटरी शेड्स है। एक ब्लैक है जिसमें थोड़ा सा हल्का हल्का सा ग्लिटर है, बट इट्स नॉट अ चंकी पार्टिकल्स। आपको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं लगेगा कि कुछ चंकी है और समथिंग लाइक दैट। सो इसके जितने भी आई शेडोज़ हैं, जितने भी ग्लिटरी आई शेडोज़ है, बहुत ही अच्छा सा पिगमेंट है उसमें, बहुत ही सेटिस्फाइड वाला पिगमेंटेशन है। एंड या मैंने ये पैलेट चूज़ किया बिकॉज आई लाइक वेरी मच न्यूट्रल काइंड ऑफ अ लुक। सो इसलिए मुझे इसमें बहुत ही न्यूट्रल शेड्स मिल रहे थे एंड ग्लिटरी शेड्स मुझे पसंद है। सो इसलिए मैंने ये पैलेट लिया। आप लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से पैलेट चूज़ कर सकते हो। आई गेस 4 या 5 शेड्स है इस पैलेट में। और इसका ब्लश भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्वाइट पीची पीची सा है इसका, यू नो लाइक दिस। बहुत ही प्यारा हाइलाइटर शेड है, पिंकिश हाइलाइटर शेड है। मुझे पिंकिश काइंड ऑफ हाइलाइटर आजकल बहुत अच्छी लग रही है मेरे स्किन टोन पे। इट लुक्स फैब, फ्लैटरिंग लगता है बहुत। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो यू गाइस कैन सी दिस इज़ द शेड ऑफ हाइलाइटर. So yeah, without wasting our time now, let's begin with this palette and use it on our face and eyes. So let's see which eye I'm gonna create a eye look, peachy eye look with this. So let's do that. Now from the Swiss Beauty palette, I have taken contour shade and I'm gonna use it on the hollow of my cheeks to contour my face. Contouring हम इसलिए करते हैं to give our face bit definition, bit structured, so it doesn't look flat. So yeah, that's why I'm doing it. And basically I like to use it only on my hollow of my cheeks and on my jawline because थोड़े double chin हो गए हैं, so that's why. So yeah. Now I've taken the blush from the same Swiss Beauty palette and इसका blush बहुत ही ज़्यादा pigmented है, so इसलिए मैं अच्छे से blend कर रही हूँ ताकि काफ़ी अच्छा flush look लगे. So that's why I'm blending it really well and I really like the blush shade. It's very much peachy and going for this today's look. So thumbs up to the blush. Now I'm taking the highlighter shade from that palette and using it on the high points of my face like cheekbones or tip of my nose, cupid's bow, brow bones and those areas. So highlighter is very much sheen and very beautiful, looks really natural. It's not that blinding, but I really like my highlighter to be look natural on the daily basis. So this one is one of them. So I really like the highlighter. So now let's move on to eye makeup and I'm taking this blush shade to use it as a transition on my eyes. So basically I'm using it all over my eyelids. Now I'm taking the contour shade and using it on my outer V. So now I'm gonna apply a glittery shade from this palette and I have taken this rose gold kind of a bronzy shade एंड बहुत ही पीची टोन में है ये शेड, तो आज के लुक के लिए बहुत ही सही था. सो इसलिए आई हैव यूज़ दिस ऑन माई आईलिड्स एंड मैं आप लोगों को इस तरह से दिखा रही हूँ बिकॉज जब मैंने आईलिड्स पे अप्लाई किया था तो वो क्लिप मुझसे कहीं मिस हो गया है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. सो दिस इज़ द एक्चुअल शेड विच आई एम शोइंग यू गाइज, और आईलिड्स पे भी बिल्कुल इसी तरह का शेड आया था. एंड नाउ ब्लश एंड कॉन्टोर शेड को मिक्स करके आई हैव यूज्ड इट ऑन माई लोअर लैश लाइन टू डिफाइन द लुक. And the glitter shade I am using on the half of my lower lash line, starting from the inner corner. And now I have taken the black shade from the palette and इससे मैं अपने eyes को define कर रही हूँ, and very close to my upper lash line I am making a wing, and as an eyeliner I am using it, and with the brush I am smudging it a bit so that it looks quite smoky. Now with the same highlighter I am going to highlight my inner corners as well.
And now to finish off the eye look, I am using mascara here. This is from Wet n Wild and this is called Double XL Voluminizing Mascara. So you will get all the product details in the description below, so don't forget to check it out. And now for the lipstick, I am using it from Sugar Cosmetic and this is called It's a Pout Time lipstick in the shade Better Call Me Salmon. I have shown this in my Sugar Cosmetic के haul में, and this one is not matte finish lipstick, this is semi matte and the shade was perfectly going for this look. Now lastly I'm gonna set my face with this setting spray from Blue Heaven. बहुत ही अच्छा long lasting makeup आपको provide करता है ये. So this is the final look, guys. Can you guys see? This is so luminous, so glossy, so dewy, so glowy look. I just love this kind of a look. I mean, मुझे इस तरह का dewy finish वाला look बहुत ज़्यादा पसंद है. The highlighter is just flattering, and eye makeup which it has turned out to be, it's really amazing. You guys also let me know in the comment section below कि आप लोगों को ये ग्लोई पिची लुक कैसा लगा है. मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है. सो यू गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड सो दिस इज़ प्रीटी मच इट. सो जाते जाते प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हिट करिएगा लाइक बटन को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. हिट दैट रेड वाला बटन एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियो लाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आए. So yeah, with this I'll take your leave and promise you all to see you soon on my next video. तब तक के लिए take care, stay safe, stay healthy, stay fit and most importantly be kind. So much love. Bye.